advance the gut is, तो we have to start with parenteral nutrition and ट्रॉफिक फीड स्टार्ट करके धीरे 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 20 to 30 ml पर केजी उसे फीड हाइक कर करके बेबी को फुल फीड तक लेके जाना है। 1 वीक के बाद जब बेबी फुल ग्रोथ फेज में आ गया है, हमको वही फीटल ग्रोथ रेट्स अचीव करना है। हमारा वीकली टारगेट मतलब डेली टारगेट होना चाहिए 15 to 25 ग्राम्स पर केजी पर डे। एंड इस टाइम पे बिकॉज मदर्स मिल्क में बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर्स कम रहेगा, प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फेट ये सारे रेशियोज कम रहते हैं, तो हमको 45 एंट्रल फीडिंग देना पड़ेगा। पेरेंटल न्यूट्रिशन बंद करना है as soon as the baby has developed enteral feeding tolerance and can tolerate proper enteral feeding. So अगर आपको कुछ नंबर्स याद करनी हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक बच्चा जब डे 7 के बाद एटलीस्ट फुल फीड्स आ जाए तो 150 to 180 ml पर केजी फीड्स में, जब तक बर्थ वेट अचीव नहीं करता है तब तक हम बर्थ वेट ही लेते हैं। जब तक बर्थ वेट क्रॉस कर जाए तब फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए जो केजी यूज करा जाता है वो बियॉन्ड द बर्थ वेट, दैट इज दैट डेज बर्थ वेट दैट यू हैव टू टेक। एंड ये अगर अचीव करेंगे तो आप एनर्जी आपको अचीव करने के लिए 120 to 140 देना है किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। नाउ if you look at the protein, it is 3.5 to 4 grams per kg per day. सोडियम पोटेशियम भी हम लोग उस हिसाब से पेरेंटल न्यूट्रिशन में कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए 160 to 180 या 70 to 90 फॉस्फोरस देना होता है। लेटर ऑन बियॉन्ड 2 वीक्स ऑफ लाइफ हम कोशिश करते हैं कि बेबीज को 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी आयरन दे और जिंक 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी दे। इसके साथ एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, वो है विटामिन डी, जो कि हम 400 to 700 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी पर डे में सप्लीमेंट करते हैं। अगर हम एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ जाएं तो जैसे हमने बिगिनिंग में आपको बताया था, आप एक 24 वीकर का एनर्जी स्टोर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल फैट नहीं है, प्रोटीन परसेंटेज एकदम 8% है। तो अभी वो एनर्जी एक्विजिशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए उसकी एनर्जी स्टोर्स ही नहीं है। जब बच्चा बड़ा होके फुल टर्म तक आ जाता है, उसकी वजन 3 किलो लगभग आ जाती है, तो उसकी लिपिड की परसेंटेज, फैट स्टोरेज भी बढ़ जाती है, 15% हो जाती है, प्रोटीन स्टोरेज भी बढ़ जाती है, वाटर परसेंटेज घट जाती है। सो एज ए रिजल्ट बच्चे के पास कुछ एनर्जी स्टोरेज होता है। इसीलिए जब बच्चा प्री टर्म पैदा होता है, हमको ये एनर्जी स्टोरेज ग्रोथ के लिए बाहर से देनी पड़ती है। और सब लगभग मिला के जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, जो बच्चे को सांस लेने में, नॉर्मल जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के लिए चाहिए होती है, वो अराउंड 45 किलो कैलोरीज होती है। और बाकी फिजिकल स्ट्रेस, एनर्जी लॉस, वो सब को अकाउंट करके एंड ग्रोथ को मिला के आपको एनर्जी एटलीस्ट 120 to 140 देना होता है, सो दैट बेबी ग्रोज प्रॉपरली। ये चीजें अगर बच्चा सिक होता है, आप एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, फ्लूइड को कम कर सकते हैं। तो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा याद रखना है कि 120 to 140 कैलोरीज पर केजी देना होता है। तो ये 120 to 140 आपको 150 to 180 ml पर केजी पर डे फ्लूइड इनटेक में देना होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके कैसे क्या कैलकुलेशन होता है हम धीरे धीरे वो भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 200 तक अप्रोप्रिएटली आप दे सकते हैं, बट आप याद रखिए 150 to 180 ml पर केजी इनफ होता है हमारा अप्रोप्रिएट 140 एनर्जी दे रहे हैं। तो 120 to 140 बार बार कह रही हूँ सो दैट आई वांट यू टू रिमेम्बर जस्ट ये बेसिक कुछ नंबर्स। एंट्रल एनर्जी इंटेक्स ज्यादा 140 to 160 जरूरत पड़ सकती है अगर बच्चे को बीपीडी है या कोई क्रॉनिक डिजीज, कार्डियक कंडीशन है। Otherwise, in a stable growing preterm baby, you have to target 140. कुछ कम अराउंड 100 to 110 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।
सो ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ फ्लूइड्स दे रहे हैं, जीआईआर हम डे वन पे कनेक्ट करते हैं 10% डेक्सट्रोज, तो उसमें आपको सिर्फ कैलोरीज 20 किलोग्राम पर केजी पर डे मिलती है। तो इसीलिए अगर बच्चा 3 दिन से ज्यादा प्रीटर्म बच्चा 3 दिन से ज्यादा आईवी मतलब फीड्स पे नहीं जा पा रहा है एंट्रल फीड्स में, आपको आईवी फ्लूइड से हटके पैरेंटल न्यूट्रिशन देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे डिस्कस किए 120 रिक्वायरमेंट होती है और आईवी फ्लूइड्स देने पे 20 to 30 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आप रीच कर पाएंगे जस्ट प्लेन आईवी फ्लूइड्स देंगे तो। सो एक और चीज याद रखना है, जब हम कैलोरीज देते हैं, कैलोरीज बनती हैं प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज से। तो सिर्फ फैट से ज्यादा कैलोरीज देने से या ग्लूकोज से ज्यादा कैलोरीज देने से वो कैलोरी काउंट नहीं करेंगे। तो आपको एक प्रोटीन फैट रेशियो, प्रोटीन एनर्जी रेशियो मेंटेन करना होता है, जो कि 2 to 3 ग्राम्स मतलब ऑफ प्रोटीन पर 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर न्यूरो डेवलपमेंट। पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर स्टार्ट करें तो हम यूजुअली एमिनो वन यूज करते हैं 10%, एंड हम कोशिश करते हैं 3 से 4 ग्राम पर केजी पर डे एमिनो वन स्टार्ट करें। एज सुन एज एंट्रल फीडिंग स्टार्ट होती है एंड स्लोली बेबी फुल फीड्स तक पहुंचता है, हमको फोर्टिफिकेशन ह्यूमन मिल्क सैशे 45 सैशे से फोर्टिफाई करना होता है, एंड उस टाइम हम टारगेट करते हैं लगभग 4 ग्राम पर केजी पर डे एंट्रल फीडिंग में प्रोटीन मिल जाए। सो ये इम्पोर्टेंट है फॉर ओवरऑल ग्रोथ एज वेल एज ब्रेन ग्रोथ ऑफ द ग्रोइंग प्री टर्म बेबी। माँ के दूध की बात करें तो टर्म बेबी में 1 ग्राम पर 100 ml मिल्क में प्रोटीन होता है, और प्रीटर्म बच्चे का मैक्सिमम 1.5 ग्राम होता है, जो कि हर हफ्ते 0.5 ग्राम के दर पे फॉल होते रहता है। तो इसीलिए हम फोर्टिफिकेशन ऑप्शनल नहीं एसेंशियल मानते हैं, एंड जब भी बच्चा 100 ml पर केजी एटलीस्ट पहुंच गया है, हम ह्यूमन मिल्क फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, एंड जब तक हम 180 ml पर केजी दूध तक पहुंच जाते हैं एंड उसको फोर्टिफाई करते हैं, प्रोटीन इंटेक 4.4 ग्राम्स पर केजी इंश्योर कर पाते हैं। लिपिड्स की बात करें तो हम यूजुअली अगर आपका एनआईसी एडवांस है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि डे वन में ही लिपिड स्टार्ट करें, नॉट ओनली बिकॉज ये कैलोरीज देता है बट ऑल्सो एसेंशियल फैटी एसिड्स भी देता है, एंड यहाँ की कुछ डीएचए और एआरए आपने सुना होगा कि कंपोनेंट्स है जो रेटिनल और ब्रेन ग्रोथ के लिए काफी मैटर करते हैं। इन सब के लिए बेस्ट सोर्स however remains human milk. So as soon as you get the opportunity, हमको निडर होके इंटरल फीडिंग एस्टैब्लिश करना है और बेबी को फुल इंटरल फीड्स पे लाना है। सो बियॉन्ड दिस, जैसे अगर कोई बहुत बार सुनने को आता है डीएचए ईपीए सप्लीमेंटेशन है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इतना कोई बेनिफिट देखा नहीं गया है। हमारा रोल क्या है, बच्चा अगर लिपिड्स में है तो हमको ट्राइग्लिसराइड मॉनिटरिंग करनी होती है, स्पेशली बच्चा अगर सेप्टिक है या स्मॉल फॉर डेट्स। एंड अगर फैट इंटेक की बात करें, आपने 45 मिनट में एंट्रल फीड्स में अगर फोर्टिफिकेशन कर रखा है तो फैट इंटेक 7 to 8 ग्राम्स पर केजी इंश्योर हो जाती है। नेक्स्ट हम पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करें या जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो हम स्टार्ट करते हैं 6 to 8 मिलीग्राम्स पर केजी पर मिनट ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमको 10% एक्सट्रोज डे वन पे 80 ml पर केजी पर देते हैं तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे हमारा मेन रोल है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना है, और हमको एक 70 to 150 के रेंज में ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। बट लाइक आई सेड, हमको 120 to 140 किलो कैलोरीज अगर रीच करना है तो हमको जीआईआर भी 9 to 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट तक हाइक करना होता है, टेकिंग केयर कि बेबी को हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। एंड एज सून एज द बेबी इज ट्रांजिशन टू एंट्रल मिल्क, अपने आप 180 ml तक अगर हम टारगेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक 11 to 15 ग्राम्स पर केजी तक टारगेट हो जाती है। एंट्रल मिल्क में प्राइमरी सोर्स आपका लैक्टोज है जो ह्यूमन मिल्क से मिलता है, एंड इट ड्राइव्स हेल्दी गट माइक्रोबायोम।
Carbohydrates in fortified human milk at upper range lead to improved in hospital weight gain, length and head circumference growth. Whereas आप अगर फॉर्मूला फीड तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो भाई पॉलीमर्स होते गोभी हैं का वो फूल देखो, ज्यादा साफ वाला ले लो, ठीक से रखता फिर। हो गया ना, वही वाला। सो फॉर्मूला फेड बेबीज में ये जो लैक्टोज एंड जो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो कम होती है, यहाँ पे पॉलीमर्स ज्यादा होती हैं एंड पॉलीमर बेस्ड फॉर्मूला आर नॉट आइडियल. सो एज एंड whenever we have the opportunity, we have to promote and we have to advocate breast milk as the best source of nutrition for preterm and term babies irrational of their gestational age. तो ये हमेशा याद ही रखना है और फॉर्मूला फीडिंग हमेशा हमेशा के लिए डिस्करेज करना है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का ट्रांसफर मदर से फीटस को होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है और ये थर्ड ट्राइमेस्टर हमने मिस कर दिया, बच्चा प्रीटर्म पैदा हो गया. तो इसीलिए हमको टारगेट करना होता है कैल्शियम 120 टू 200 मिलीग्राम पर केजी एंड फॉस्फोरस 170 टू 110 मिलीग्राम पर केजी पर डे. एंड इसके साथ हमको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम भी 120 दे दो फॉस्फोरस भी 110 दे दो, हमको एक रेशियो मेंटेन करना होता है. 1.4 से नीचे होगा कैल्शियम टू फॉस्फोरस रेशियो. सो मोस्ट ऑफ द सिरप्स दैट वी गेट उसमें पॉइंट मतलब वन इज ये रेशियो मेंटेन होती रहती है एंड हमको यही कंटिन्यू करना होता है. Similarly, vitamin D 400 to 700 international units per kg is also mandatory. So ये तीन micronutrients are extremely essential for preventing metabolic bone disease of prematurity. And इनिशियली पेरेंटल न्यूट्रिशन जब दे रहे हैं तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे सकते हैं. एज सुन एज द बेबी goes on to enteral feeds and reaches full feeds and fortified breast milk will be very low in calcium and phosphorus. वो इसीलिए आपको fortified human milk ही प्रोवाइड करना होता है. Regular monitoring of phosphorus and calcium status is also recommended. So at least 4 weeks पे आप monitoring start करिए calcium and phosphorus levels and usually phosphorus levels above 5.6 milligram per deciliter and 600 should be our target. So जब हम 180 ml per kg पर फॉस्फोरस और कैल्शियम फोर्टिफाई करते हैं तो एटलीस्ट 180 ग्राम्स मिलीग्राम्स पर केजी कैल्शियम एंड 80 ग्राम्स फॉस्फोरस मिल जाता है. आयरन की बात करें तो आयरन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरो डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एनीमिया जो कि प्रीमेच्योरिटी में होती रहती है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है. तो 2 हफ्ते के बाद आप आयरन सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करिए 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे से एंड जब बच्चा फुल एंट्रल फीड्स पे हो. फर्स्ट 2 वीक में बच्चा ट्रांजिशन करता है और काफी ऑक्सीजन मतलब आयरन सेप्सिस को बढ़ोतरी देता है तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं आयरन देना. एंड जब आप फोर्टिफिकेशन इंश्योर कर लेते हैं तो ये भी आपके आयरन इंटेक का ध्यान रखता है. अप टू 2.8 मिलीग्राम पर केजी पर डे आयरन मिलता है. लेकिन इसकी भी मॉनिटरिंग जरूरी है. आप जब भी आपका यूनिट प्रोटोकॉल हो हर हफ्ते 2 हफ्ते आप आपका हीमोग्लोबिन या हेमेटोक्रिट स्टेटस फेरिटिन और रेटिकुलोसाइट रेस्पॉन्स जरूर देखिए. विटामिन ए ऑल्सो लंग ग्रोथ एंड आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये यूजुअली पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड फोर्टिफायर्स में मिल जाती है. जिंक बहुत एसेंशियल है ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन के लिए एंड जब डेफिशिएंट होती है तो पुअर ग्रोथ एंड लोअर एएलटी लेवल्स पे मैनिफेस्ट करता है. रिकमेंडेड इंटेक्स है 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे एंड ये भी जिंक जो होती है वो इनएडिक्वेट होती है 180 ml पर केजी फोर्टिफिकेशन करने के बाद भी. इसीलिए हम मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी ऐड करते हैं इन प्रीटर्म बेबीज
Hello, ma'am. You are not audible. Yeah, I think some internet connection problem is there. Yeah. Meanwhile, Dr. Shruti is reconnecting to us. I would just like to ask that how many people are doing the metabolic disease workup in the unit? People can unmute and tell. Every 2 weeks people are doing, okay. So first workup is usually done between 21 to 28 days. Thereafter you can do after every 2 weeks. And how many people are using lipids and aminoven in the unit? Is every unit is able to use lipids and aminoven? Yeah, we can Okay, take question answers also. Yes, sir. So we are doing it, most of the people are doing it 21 days. And preferred type of lipids they have asked, sir. Would you like to answer, sir? What are the preferred type of lipids that we should use in our unit? So 20% lipids we have to use, and SMOF lipids are preferred over other lipids. Extremely sorry. Yeah, Am you I are audible audible, now? Dr. Shruti. Yeah, you are Yeah. audible, Dr. Shruti. Yeah. I'm really sorry for the. Your slides are not very clear, not very clearly visible. They are little blurred. So what we have seen is that most of the units are able to use aminoven, but not able to use lipids. So here is कि parental करिए एटलीस्ट एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज में, बट द मेन गोल इज इंटरल फीडिंग जरूर स्टार्ट करिए एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ाइए. Audible, right? I can proceed, no? I need a heads up. Yeah, you are audible, Dr. Shruti, but slides are not very clearly visible to me. Dr. Alpa, are the slides visible to you? Ma'am, slightly blurred. Yeah, the slides Is are it better slightly now? blurred. Voice No. Is it better now? I think it's raining heavily, so there is a problem in the network. Okay. Okay. You can go ahead then. You can just speak, and maybe the slides will become clearer in a minute Yeah. or two. Yeah.
तो हमने जो डिस्कशन किया है वो अभी तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की बात की, सोडियम भी हमको ध्यान देना है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू मॉनिटरिंग, नॉट ओनली लाइक जो हम कर रहे हैं यूनिट में वो हम कैसे मॉनिटर करें और कैसे पता लगे कि जो हम कर रहे हैं वो काम दे रहा है या नहीं। एंड लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स भी आके पूछते हैं मेरा बच्चा तो ग्रो ही नहीं कर रहा, तो उनको हम कैसे ऑब्जेक्टिवली बताएं कि नहीं आपका बच्चा ग्रो कर रहा है। सो मेन चीज है इधर ग्रोथ। एंड हमको एक चीज जो डेली मॉनिटर करनी होती है वो है वेट। एंड वेट गेन हमको टारगेट करना होता है around 15 to 20 grams per kg per day after the first week. Like we already have discussed, first 7 to 10 days में weight loss होता है and बच्चा regain करता है birth weight. Length and head circumference gain again after the first week should match 1 centimeter per week. आपकी क्या रोल है? ये डेटा बहुत ही एसेंशियल है, तो आपको एक्यूरेट बेबी को विदाउट एनी क्लोथ्स, डायपर, नेकेड विथ ग्रोथ करना है। यही वेट हमको डिसाइड करता है बच्चे का फ्लूइड आउटपुट, बच्चे को क्या परसेंटेज ऑफ एमिनोवेन फैट मिले। अगर ये वेट में गड़बड़ हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऑलराइट, सो आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेट एंड ensure that the weight that is measured daily during morning care is accurate. And once you've done that, you have to plot the weight, length, circumference on the group chart, whichever your unit prefers. Three terms may we follow Fenton's, then go ahead with Fenton's. Growth. Dr. Shruti, you are not audible. Yeah. सो नाउ हमने ग्रोथ तो मॉनिटर कर लिया। बायोकेमिकली क्या क्या देख सकते हैं? अगर हमको प्रोटीन मार्कर के लिए देखना है तो हम यूरिया देख सकते हैं या ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन देख सकते हैं। तो हम हमेशा टारगेट करते हैं 10 to 20 के बीच में प्रोटीन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन रहे। ज्यादा कम है तो हम एमिनोवेन या जो हमारा फोर्टिफिकेशन है उसका डोज बढ़ाते हैं। अगर ज्यादा है तो हम प्रोटीन या एमिनोवेन जो भी हम दे रहे हैं उसका सोर्स कम करते हैं। एंड जब हम मेटाबॉलिक बोन डिजीज स्क्रीनिंग करना है, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टार्ट करते हैं 4 weeks or even earlier if the baby has been on prolonged parenteral nutrition. We have to do the MBD screening and accordingly correct the deficient micronutrients. So not only is nutrition important, in tandem it will not work. You have to use a few more adjuncts. So non-nutritive sucking as soon as the baby reaches 32 to 31 to 32 weeks यूज करना है। ये ट्रांजिशन करता है ओरल फीडिंग को बहुत जल्दी, एंड मदर्स की ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स भी बढ़ी रहती हैं एंड बच्चा जल्दी डिस्चार्ज होता है। कैंगरू मदर केयर अगेन इज नॉन नेगोशिएबल. You have to start kangaroo mother care as soon as possible and try to achieve at least 8 hours of KMC per day so that you increase the breastfeeding rates. And this has also known to show reduced mortality, nosocomial sepsis and reduce. तो अगर हम आज के क्लास की बात करें तो हमको we have to remember that protein is the driver of neurodevelopment. Parenteral nutrition दे रहे हैं तो please start parenteral nutrition early, preferably from day 1 of life, and start enteral nutrition with trophic feeds if the baby is hemodynamically stable. Enteral feeding progress appropriately if the baby is tolerating. Human milk बहुत important है. It is again non-negotiable, but it is not enough in preterm babies. So you have to start fortification as soon as the baby tolerates at least 100 ml per kg, even earlier if it's your unit protocol. ट्रॉफिक फीड्स कैलोरीज के लिए नहीं, हम गट मैच्योरिटी के लिए स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर बच्चा शॉक में नहीं है, हेमोडायनामिकली स्टेबल है, तो ट्रॉफिक फीड स्टार्ट करिए। ये सब करने के बाद बच्चे का ग्रोथ एवरी वीक मॉनिटर करिए, एंड इफ बेबी इज ऑल्टरिंग देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज द ग्रोथ ऑल्टरिंग हैपनिंग. MBD status, iron and other micronutrients have to be seen regularly, weekly, and then supplemented appropriately. Vitamin D and iron have
also need to be taken care of, and beyond 2 weeks of life, their energy, their requirements have to be met appropriately. So this is it from my end. I apologize for the streaming errors in between because of the network disturbance. Yeah, now only the network is fine at the end of the session. So it's fine, but we could go through all the slides you have shown. Thank you very much. It was a very practical session. I think more towards the total parental nutrition that we are not able to do very routinely in our practices. I would like to ask Akash sir, you are there? Yes, I'm there. Okay, I would like to ask Akash sir. He's in Medanta, one of the best unit of the country, and I would also like to ask Anil sir. He's in CHC Mawana. So a small unit and the big unit. So what problems do you face? What errors do you see that the common mistakes we are doing, your nurses are doing, or they're not able to understand, or what needs to be taught to them more? Akash sir can answer first that what are the practical errors that you are seeing in your unit, level 3 or 4? Yeah. I won't say errors, but some of the hindrances which staff or new doctors who join the unit uh, they faces that there is a common notion that lipid should not be given in a sick baby. Yeah. So I think that is Correct. a very false state or false belief that one should not have. That there is no hardcore evidence to show that lipids they cause thrombocytopenia or they should not be given sick people. And many of the units I know personally, they altogether do not give lipids unless and until Right. we continues to be on parental nutrition for 2 or more weeks. So again, that is not a very healthy practice. And Correct. again, you should just like we do not hesitate to start normal feed, even if it is 1 ml or 0.5 ml in preemies or ALBW babies. Similarly, we should not have any hindrances to start parental nutrition, even if we know that baby may be started on feeds in next few days. So as soon as the baby arrives in the unit or gets admitted, he should be started on parental nutrition if he is not near total parental nutrition. Right. So lipids people are scared of most of the times. So lipids and aminovins they can be started on day one itself, and sickness doesn't contraindicate that lipids cannot be started. Okay, Anil sir, would you like to tell your experience with your nurses? What problems do you face? Good evening to all. And Dr. As you know, I am working with a very basic unit of neonatal care there. It's a government setup and it's a level 1 government setup. Right. We are running a SNCU in a rural area. So we don't have so much advanced equipment and all. And still with the lack of staff nurses, lack of doctors also, we are trying to give our best there. And we do not use the parental nutrition there. Hello. What is the reason that you are not able to use parenteral nutrition? Actually, we don't have the staff also, and we don't have the much advanced equipments there, and even we don't have the ventilators there. Okay. So, Dr. Shruti, would you like to tell that do we need a central line or any advanced equipment for TPN to be started? Can it be given through peripheral lines as well? So Aminovin and at lipids? least aminoven we can start. I mean, it is safe to give at least 1.5 grams per kg. It does not cross osmolality of more than 600 milliosmoles. So we can safely start aminoven at least in Yeah. extreme preterm babies. You don't need I mean, if we take care of proper aseptic procedures for preparation of aminoven, we can take the risk of not preparing it even inside laminar flow. Yeah. Because if we do not supplement proteins, a baby loses at least 1.1 to 1.5 grams per kg per day. तो हर दिन 1.5 ग्राम प्रोटीन वेट लॉस मतलब Right. स्टार्ट किया and 15 days तक baby would have lost at least 15 grams.
So protein is extremely essential and day 1 पे at least start कर सकते हैं. Lipids again is also important, but protein definitely day 1 से हम peripheral cannula से भी दे सकते हैं. Right. So even if we don't have any advanced equipment at our setting and we are at a resource limited setting, at least aminoven start किया जा सकता है बिना laminar flow के भी और बिना peripheral cannula से किया जा सकता है, बिना central line के भी किया जा सकता है. And एक और चीज है, हम्म. प्रोटीन जब देते हैं तो हम जो हाइपरग्लाइसीमिया देखते हैं एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज में, वो भी काफी कम रहती है. So that also helps to counter the hyperglycemia response in extreme preterm. So, I mean, it is a request to at least start proteins if possible. I know it is difficult, but it's a change. एक बार start हो गया तो वो चलता जाता है. Thank you, ma'am. Okay, so do we take the questions? Anil sir, would you like to take the questions and would you like to moderate the questions? There are some questions in the chat box. Dr. Shruti can answer and Dr. Anil can take the questions. One question is there in the chat box. Does as 20% block the PIC line 28 gauze, should we give it via peripheral route only? In our experience, it does happen sometimes, but what you have to ensure is one French pick lines, whenever you use it continuously. If there is even a minimal interruption, the lines often get blocked. And in our experience, through central line also lipids work well. So you don't have to give it through peripheral cannula. 20% works well in central line along with your IV fluid as well as aminoven. Ma'am, another question is there, if TPN is not available, what can be alternative for the newborns below 28 weeks of gestation? That's what we discussed, sir. At least parenteral nutrition may we must start proteins with 1 to 1.5 grams along with your 10% dextrose glucose supplementation, bare minimum, and your enteral feeds and height as tolerated. But less than 20 weeks, it's challenging without parenteral nutrition if you have to ensure better outcomes. Ma'am, another question is, can we give calcium and phosphorus in the same fluid? So calcium and phosphorus, if given through the same fluid, get precipitated. So what we often do is we do cycling. In my unit, we give calcium for 2 hours, stop it for 2 hours, and then give phosphorus for 2 hours. So it's like a cycle that goes on so that they don't get mixed. And there are a few other ways in which calcium and phosphorus can be prepared. They reduce the pH of the IV fluid aminoven in which it is prepared. But practical solution is cycling. Give calcium for some time, stop it, then give phosphorus through different lines, of course. Yes. What we do in our unit is that we give phos through central line and we give calcium as 6-hourly through peripheral cannula, so that you don't have a confusion and you are not interrupting the central line, because that will increase the risk of sepsis. So what we do, sir, is we keep it connected and we just start it and stop it every 2 hours and then give a break in between. Whichever way, any which way, they cannot run together simultaneously. Okay, ma'am. Ma'am, next question is, while tapering total parenteral nutrition, what should be stopped earlier, either lipid or aminoven? So you have to decide the entire, like we discussed, as the baby reaches end. So we stop total parenteral nutrition as soon as the baby reaches a fluid volume of 80 to 100 ml per kg enteral volume, because we assume that the baby can be tapered and stopped off total parenteral nutrition. In such a case, the target is to achieve the appropriate protein intake. So better idea is to stop lipids and then slowly taper down and stop your protein.
and taper off TPN entirely by 100 ml per kg enteral volume. Okay, ma'am. Ma'am, next question is, should aminoven be protected from sunlight? No, lipids have to be. Lipids go into photooxidation. So lipids have to be covered appropriately and be protected from any source of light. Okay, ma'am. Ma'am, next question is, how much calcium and phosphate can be given in TPN? And how much can we increase if baby is having hypophosphatemia at 2 weeks? Again, that's total unit to unit protocol. So ideally, phosphorus salts that are available with us is potassium phosphate. But in Western countries, they use acetate-based solutions, and phosphorus hike is not limited because we use potassium-based solution for phosphorus. So वो limit हो जाती है, and we maximum can go hike up to 30 to 50 max, and calcium we reach up to 80 milligram per kg, so 2 ml per kg standard. Beyond that, as soon by 2 weeks, we presume that baby would have reached enteral feeds. Then we supplement enterally with calcium, phosphorus, पहले fortification के साथ, and then we give additional ADFOS supplementation to achieve extra phosphorus levels if hypophosphatemia is present. I think, ma'am, questions are over. And thank you so much. Yeah, Thank you. a lot of questions are there. I think one new question is also there. Last question. No. Can we give aminoven in metabolic acidosis? Again, we have to find out what is causing metabolic acidosis. So if it is because of hemodynamic compromise or shock, then in such cases, you can limit and give a minimum of 1 gram per kg of aminoven. This is to prevent the catabolism that we were discussing. So baby will definitely lose around 1 gram per kg. But if you cannot even target 1 gram per kg due to limitation of fluid volumes, and you have to run simultaneous inoprobes. So in that case, you can stop it for a day or two and restart as soon as the baby is hemodynamically stable. But minimum 1 gram per kg can still be continued. All right. I think questions are over. Thank you so much, Dr. Shruti. That was a wonderful session. And I think the take home message is that nutrition is not just a supportive care anymore. It is just like ventilator is very important. Just the same way, the nutrition is very important. It is every calorie, every gram of protein, and every day of optimizing the nutrition. Taking effort for optimizing the nutrition, it contributes to better growth. Brain development is very important. The motto should not be just discharge of the baby. Okay, survival is not the motto. It should be intact survival for the baby. So if anybody is not using TPN in the unit, parental nutrition, at least they can start with aminoven. If they can start aminoven in the unit, the purpose of the whole session will be solved. Thank you, Dr. Shruti. Thank you, Anil sir. Thank you, Dr. Alpa, for joining us. Thank you, Akash sir. I think we can close the session. And thank you, Dr. Priyanka, for moderating the session. Thank you. Thank you, sir. And thank We you have shared one link in the chat box for all regular academic updates or academic discussions in the group. People can ask or people can discuss any academic thing in that group also. So all of you can join the group. I've shared in the chat box. I'm resharing it again. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Ashu, ma'am. Okay. Good night, everybody.